Um, well, I just want to add to this, seeing Dr. Akbar Naqvi sitting here, what really was something so beautiful in my growing up period as a student in painting in the small attic in Ali Imam Sahab's gallery. It was a nucleus. It really brought in people of literature, people, poet, philosophers, all the artists were Shakir Ali visiting, Jamil Naqsh, Bashir Mirza, Shahid Sajjad, Ahmad Parvez. Dr. Saab was very much there, very young, dashing, angry with his beautiful wife. There was constant debate. People argued, fought, threw things around. But I think it was really in a lifetime. Right now, there's such fragmentation. I think the artists don't meet. There is no nucleus. That is something I really miss. And perhaps that's something that really needs to be done. Maybe all educational institutions. We'll all leave from here and we'll get on with our lives. And the minute we leave from this room, and I think all these thoughts are perhaps just left somewhere in the back of our minds. But I think it really needs to be meeting and discussing and trying to see what solutions lie ahead. Shukriya. शुक्रिया नूरजहाँ. आई थिंक आपने सही तरफ इशारा किया है कि हमारी सोसाइटी अपनी इंटॉलरेंस की वजह से और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से काफ़ी हद तक फ्रैगमेंटाइज हो गई है. और in this fragmented society, artists भी वो जो cohesiveness थी सोच की, एक connection की, उसको वो ढीली पड़ गई है और हमने उसको लूज़ कर दिया है. और जब आप कहती हैं कि एक न्यूक्लियस होनी चाहिए, आई थिंक वो इंसानों से ही बनती है और इदारों से ही बनती है. और हमारी जो जनरेशन यहाँ बैठी हुई है, पर्टिकुलरली साइमा तो खैर इज़ अ यंगर एडिशन, वो जो बैठी हुई है, हमें बहुत मौक़े मिले हैं इस न्यूक्लियस को करने के लिए, समेटने के लिए, बनाने के लिए. और शायद हमें उनके उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि वो मौक़े क्यों गुम हो गए. और now I think they've told us that we have a few minutes. They've told us 10 minutes, but we will stretch it. Because it's a Sunday morning and I think we cannot expect people to be here on Sunday morning on time. So, I think we could assert ourselves there. So I'd now like to ask Saima to share her views with us. Well, actually, thank you very much, Niloufar. And I'm actually glad to be here myself on time. So, and after your talk about clouds, I think my head is quite filled with white, fluffy clouds. Anyhow, as a communication designer, visuals are really my security blankets. So this is probably the first time that I'm actually talking about or discussing about a subject without an image lurking in the back, So I'm missing it, seriously. But coming back to the topic, I understood it as a correlation between words and images and how they are inextricably intertwined. For example, we are born into a world of sound and vision. And it's only later that we start ascribing words to these sound and images. And subsequently, we learn how to read and write. So A is for apple, Sin se seb, coming back to that qaida. So that visual and textual dynamic is ever present. Also, I find that when we read literature, pure literature, which may not have images to it, we are forming images in our mind. We're constantly sort of, there's a descriptive passage, and we've kind of made this whole fantasy world in our head. And then, also, similarly, when we are viewing or looking at an artwork, we start thinking of words. We are trying to understand how to sort of make sense of it through words and adjectives. For example, sublime, beautiful, macabre,
So there is always, what we are really getting to is the fact that we are always thinking both in words and images. And this, there's a term for this, which is called multimodality. Um, Books which have images as well as text are multimodal texts. And what they really end up revealing are the linguistic and artistic creativity. Then on top of that, they reveal your socio-cultural environment. And also, at the end of the day, they are also revealing about ourselves, you know, as producers and creators of multimodal texts. A multimodal text would include picture books, literature designed for children, and then there would be the comic strip, obviously, with the series of frames and the speech bubbles on top, which are very interactive, obviously. And one of the most exciting one is the illuminated manuscript. And in fact, Dr. Akbar Naqvi wrote an excellent piece in this book, which I edited, Mazar Bazar, and which was about the Khamsa of Nizami, which are 5 legends by the poet, the Persian poet Nizami. And he talks about, Dr. Naqvi talks about how it's a celebration of both calligraphy as well as the miniature painting. And by the way, miniature painting is obviously originally a book art. So, and there's a very lovely parable that he refers to by Rumi, in which an ant fell onto a miniature painting page. And what he ended up, you know, he discovered that he believed himself to be in a garden of bliss. So, you know, books, they open doors to Alamul Khayal, Alamul Khayal, which would be the world of imagination. Actually, I would like to talk. Alamul Khayal, Alamul Misal. And Alamul Misal would be Dr. Naqvi? Same thing. So, and words and images, obviously, they serve the same purpose. Another thing that you mentioned a little earlier was about art and theory and criticism and all of those things and how they are interlinked. And when you visit a museum, for example, and there's usually a written expression that you come across which is supporting the artwork, the visual expression, so to speak. And then again, there are the labels, there are the titles. So all of those things are allowing to communicate meaning. And then what it really gets, what we're really trying to get to is that the making of art and the writing about it is not mutually exclusive. They're not divorced entities. And in fact, if they were to, you know, they are in conjunction, they really work brilliantly and to understand what is being, you know, discussed. So that's it. You have a minute if you want to go on and elaborate. Always. I can sing. No, but yeah. No, fine. I mean, the only other thing that I could say is, as a book designer, one of the things that is most important and imperative to do when you're designing a book is to ensure that the image is reinforcing and enhancing the text so that it engages the reader. And it's an invitation. And you don't realize, I mean, I recognize that a lot of people, when the readers especially, they don't really realize how much they're being influenced by the, you know, the choice of font, the way it's placed on the text, the, you know, italicization, etc. So all of those things really are very important to
put the whole together and draw the reader in. Thank you. Thank you, Saima. I think a designer's perspective on the topic was, an interesting addition to this morning's discussion. I have a question for Dr. Naqvi before we open the floor for questions. One was that he talked about the monotheistic nationalism that was introduced by the British in the Indian subcontinent, or what is known as South Asia today. How did that influence the creative mind, and how did writers and artists sort of, move in different direction, or did they, or did they escape it altogether? जब बंगाल मूवमेंट शुरू हुआ था तो उसके बानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने मेरी किताब में लिखा हुआ है. उन्होंने कहा था कि हमारी पेंटिंग जो है वो इंडियन होनी चाहिए. इंडियन नेशनलिज्म की इब्तिदा हुई थी मुग़ल पेंटिंग से, कि मुग़ल पेंटिंग हमारी बेसिस है, वहाँ से हम शुरू करें. मगर उस तहज़ीब का कमाल ये था कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बाद में हिंदू देवी देवताओं की भी पेंटिंग बनाई, और तमहीदन मैं ये कह रहा हूँ, और चुग़ताई ने 200 पेंटिंग बनाई जो ग़ालिबन एक म्यूज़ियम में दिल्ली के मौजूद हैं, जिन्होंने अपने ख़ास तौर से 2 हिंदू ताजिरों के लिए बनाई था. उसे चुग़ताई की हिंदू पेंटिंग कहा जाता है. तो इस किस्म की तमीज़ जहाँ तक आर्ट था या जो पुराने लोग थे, जो पुरानी तहज़ीब के लोग में, उनमें नहीं था. जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तलिफ़ अक़वाम की बात की हिंदुस्तान में, तो लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा. हालांकि सर सैयद अहमद ख़ान ने ये भी एडमिट किया कि अपने रिफॉर्म मूवमेंट के लिए कि हमको बंगालियों की मिसाल काबिल करनी होगी, और जो उनके हीरो थे वो सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे. तो इस किस्म की चीज़ें नहीं रहती थीं. जब अंग्रेज़ मोनो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया तो ये वो ज़माना था इंग्लिस्तान में ख़ुद कि रोमन कैथोलिक्स को शुमार में नहीं लाए जाते थे. इंग्लिश नेशनलिज्म में आयरलैंड के लोगों का शुमार नहीं होता था, वेल्स के लोगों का शुमार नहीं होता था, स्कॉटलैंड के लोगों का शुमार नहीं होता था. तो अगर उनको अक़ल होती तो ऐसी नेशनलिज्म लाते हिंदुस्तान में, यहाँ उसको इंट्रोड्यूस करते जो सर सैयद के मुताबिक होती. तो अगर ये एडमिट कर लिया जाता कि हिंदुस्तान में बहुत सी अक़वामें रहती हैं, तो मज़हब का झगड़ा ही नहीं पैदा होता. और दूसरी बात इस साथ मैं ये कहूँ कि जो बात कहने वाला हूँ तो ग़ालिबन हमारे हाज़रीन में गुस्से की एक लहर दौड़ेगी, इसलिए कि आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए बड़ी अजीब बात हो. बात हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान में है कि हमने, और ख़ास तौर से वो लोग जो बाहर से पढ़ कर आए और जिनको मैं कहता हूँ कल्चरली ऑर्फन पीपल इन पाकिस्तान, जो अंग्रेज़ बन गए यहाँ आकर, उन लोगों ने मौलवियों से अपना सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता कर दिया. और वहाँ से ये बुनियाद पड़ी. मिसाल के तौर पर 3 किस्म के मौलवी होते हैं. आप पुरानी तारीख़ इस्लाम की पढ़ें. मुसलमान जो है वो अपनी तारीख़ पढ़ने से बहुत डरता है. उसकी वजह भी है, उसको अपनी तारीख़ से कोई वाक़फ़ियत नहीं है. पुराने ज़माने में 3 किस्म के लोग होते थे. उलमा में एक आलिम होता था, और मेरी खुशकिस्मती है कि सुन्नी शिया दोनों आलिमों से मेरी मुलाकात हो चुकी है. उनसे मिल चुका हूँ मैं, उनकी सोहबत में रह चुका हूँ. तो आलिम होता था, और एक मौलवी होता था जिसे उलमाए सू कहा जाता था. वो सियासत में मशगूल रहा करते थे, पैसे बनाते थे. और एक तीसरे किस्म का मौलवी होता था जिसे कहते थे फित्तीन,
کہ فتنہ پیدا کرنا اس کا. تو ہمیں اس کا کچھ علم نہیں کہ ایسے عالموں سے ہم اپنا رابطہ رکھتے انگریز نہیں بن جاتے تو یہ معاملہ ہوتا نہیں. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, میں مولویوں کو مجھ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا, میری مولویوں سے بڑی دوستی ہے. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا, جماعت اسلامی کے ایک مولوی نے ایک روز مجھ سے کہا کہ نقوی صاحب مجھے بتائیں آرٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ ملنا مولانا جب بند ہوا اور جو بیچ میں دیوار کھنچ گئی برلن وال, تو اپنی طرف مولوی اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو سو کالڈ لبرلز کہے جاتے ہیں وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور یہ دراڑ پڑ گئی, دیواریں قائب ہو گئی. جو آپ غالباً میرا شکریہ نقوی صاحب. ہم کو اب آڈینس چاہیں گے وہ پارٹیسپیٹ کریں اور 4 کویسچنس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے بیکاز انفارچونیٹلی دوسرا سیشن شروع ہونا ہے. تو آر دیر اینی کویسچنس فرام دا فلور؟ اوکے, وی ہیو 3 ہینڈز آلریڈی اپ اینڈ مے بی another one at some point. جی میرا 3 سوال ہے. ایک تو آپ کو ایک سوال کرنا پڑے گا, آئی ایم سو سوری, باقی ہم کافی پہ کر لیں گے بات. جو ہے ایک مخصوص طبقے میں رہ گئے ہیں 8. ہاں, جی اور دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ لوگ کیا کر رہی ہیں جو نئے جو نسل ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ان کے اندر خوبی ہے, ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ جو نا بنائیں تاکہ وہ لوگ وہاں رابطہ کر سکیں. Okay, we'll take all the 4 questions and then, we'll ask the panelists to respond to that. Ji, Ali Akbar Hussain, I'm the head of the Department of Architecture at Indus Valley School. I came to this session thinking that it would center on the discussion of the correspondence between intellectual currents in art and literature. I'm wondering if any of the